Yeah. Should we So start now, good right? evening, everyone. Today we have event of how to be full stack developer in 2022 with Rohit, and he's a full stack developer. So yes, It's please Rajat. go on to the. Okay, guys. So welcome to the session, guys. Okay, how to be a full stack developer. Okay, you guys must have heard about this term a lot nowadays. Like everyone there is talking about what is full stack development, full stack developer, and I guess some people say that it is now very overrated, overwhelming. Every second person is moving forward to a full stack developer. We will be discussing everything about it, like what is it, what is this cover, and how to be a full stack developer in 2022. So before moving forward, let us know about myself, like मैं कौन हूँ. Okay, myself is Dash, and I am currently pursuing my CS undergrad from Maharshi Dayanand University. I am in the field of full stack development from past 1 year, and currently I am doing as a full stack intern in a US based company named Development Montes LLC. Okay, so moving forward with this session, here is the workflow of our session. What we will be discussing about. First of all, we will discussing what is full stack development. Okay, the term full stack, what does it mean? Next, why full stack development? We will discussing about like why only full stack development, like क्यों सिर्फ यही क्यों, और भी तो डेवलपमेंट्स है, लाइक वेब डेवलपमेंट है, मोबाइल डेवलपमेंट है, सर्वर साइड डेवलपमेंट है, इनफैक्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, फुल स्टैक डेवलपमेंट ही क्यों. नेक्स्ट वी विल मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द अपॉर्चुनिटीज इन फुल स्टैक डेवलपमेंट, लाइक आपके लिए क्या क्या गेट्स ओपन हो जाते हैं इफ यू आर इन द फील्ड ऑफ फुल स्टैक डेवलपमेंट, एंड व्हाट ऑल थिंग्स यू कैन डू विद दिस. एंड लास्ट, your very favorite one, like how to be a full stack developer. Okay, so let's start with this. What is full stack development? Before I start up, I just want to know from your side, like what do you mean by full stack development? Like तुम्हारे मन में क्या पर्सपेक्टिव है फुल स्टैक डेवलपमेंट को लेके, लाइक तुम क्या सोचते हो कि क्या चीज है फुल स्टैक डेवलपमेंट? डू राइट इन द चैट सेक्शन, आई वुड लव टू सी देम. Okay, Akash had said front end and back end. Anyone else? Okay, full stack development, yes, it means the development including both front end and back end. Okay, and full stack development is what you said, understanding like front end and back end, but it covers everything. Like when we say a full stack developer, it means jack of all trades. A full stack developer must be knowing all the things, like what is things about the software development. Like it has to be knowing that what is front end. He has to know what is back end. He has to know how to secure a site, how to secure an app, like cyber security, DevOps, development, scalability, maintainability, all of these things. Like that's why we say a full stack developer is a jack of all trades. Yeah, he might not be mastering all that trades, but he has the knowledge of all that things. Fine. Now moving forward with our session, full stack development, we will be discussing more, focusing more on front end, back end, and a little bit of DevOps. In future, if you want to discuss it about more in detail, we will love to arrange a session for that, where we will discussing more about DevOps and more about security aspects, where a full stack developer does the cyber security things and all. But for this session, we will be sticking to the front end, back end, and a little bit of DevOps. Moving forward, we will first start with front end development. What do you mean by front end development? Like front end development is the development of the graphical user interface, like whatever things, what all the things, like everything that you see on your screen. Okay, जो भी तुमको तुम्हारे स्क्रीन पे दिखता है, लाइक एनिमेशंस हो गई, ट्रांजिशंस हो गई, फोटोज, कलर इफेक्ट्स, शैडोज, जो भी तुम्हें अपने मोबाइल स्क्रीन पे या फिर अपने वेबसाइट की स्क्रीन पे जो भी तुम्हें दिखता है, लाइक फॉर एग्जांपल ये जो अभी तुम देख रहे हो पावर पॉइंट स्लाइड, अगर ये कोई वेबसाइट होती तो इसमें जो इफेक्ट्स हैं, कलर्स हैं, लाइक फॉन्ट का साइज एंड ऑल, ये सब तुम्हारे फ्रंट एंड डेवलपमेंट में कवर होता है. Okay, for example, if we go
to have a look at some example, like if I switch it here and we go to this, I guess my screen is visible. This is Samsung's website, right? Everyone looping if it is visible to you. Okay. So as we can see, this is the Samsung website. Okay. So here you can see this is heading. Okay. This is this animation, this thing that changing of highlights of the text, or this animation of the phone twisting around and all. These all things comes under the front end development thing. Okay. Like how this is animating, how the pen comes up, what is the text, color, font size, everything that you see on your screen comes under the full front end development thing. Okay. Now, for the web, the front end development consists of three major aspects. And if we want to have this front end development, we can bifurcate it into three things. One is skeleton, next one is skin or the appearance, and the last one is the brain or the functionalities. Okay. If, for example, if we start with full stack development with the web kind of thing, the thing which I started, I will bifurcate this with, I will explain this with the HTML, CSS, and JavaScript only, because the site which you seen right now, this Samsung site, is built up with HTML, CSS, and JavaScript. Like there you saw the head. Okay. Now, if I explain you like what all these things are, HTML provides the basic structure or the skeleton of the website. Like you saw there the headings, तुमने वहाँ पे headings देखी थी, buttons देखे थे, and उसके बाद photos देखे थे. Okay, तो वो सब चीजें अगर साइट में हैं तो उसे HTML डिफाइन करता है. Okay, we have to mention them in the HTML document. Like it's the skeleton, like हमारे शरीर है ना, तो उसकी जो हड्डियां हमारे skeleton है. The same way, HTML is the skeleton of your website or your front end, the thing what you are going to show. Next is the CSS. CSS refers to cascading style sheets. As the name suggests, it is for styling the HTML document. तुमने वहां पे जो भी font का size देखा था, like font का size black था, that that is defined using CSS. उसके बाद तुमने देखा था animation. Okay, उसके बाद तुमने देखा था फोटो राउंडेड थी, फोटो गोल थी. तुमने बटन देखा था, बटन का शेप गोल था. ओके. और तुमने उसके बाद कुछ आइकन्स वगैरह देखे थे. द थिंग विच इज अपीलिंग टू योर आईज, जो तुम्हें अट्रैक्ट करे कि हाँ ये देखने में सुंदर है. ओके. दैट थिंग comes under the thing CSS development. Like CSS is used to make all that things. Next, if I go back to that Samsung site again and show you this thing, like the drop down menu, or if I go, like it's not showing this drop down menu. Okay, this transition, this thing is made up of using CSS and JavaScript. Okay, the animations you see, the transitions you see, the logic behind it, how this transition and how this animation is built is using JavaScript. So that's why we call it the brain, or the like the brain of the website for the client side, for the front end side. Okay. Any doubt up to this? Okay, nice. Now we move towards the backend development. Backend development or server side development. The things which you don't see on your client side, like, okay, the codes which you are not familiar with, like how the things works behind all that thing, does comes under the point backend development. Backend development includes your database handling, includes your API modeling, API handling, and your DevOps. DevOps, we will discuss it later. Okay. Now further, if we move on, as I said, backend development handles your logic building, like what all the logic you have written to make your front end user interactive and
functional. Okay, for example, if I take you to the site my Aadhaar app. Okay, Karthik. Okay, what is an API? We will be discussing it for now being. Okay, here's my Aadhaar app. Okay, like website, and if I type here any number, like for example, I wrote 231456347890. Okay, here you can see it gave me an error that please enter a valid Aadhaar number. So this thing, like this verification and validation of data, this comes under the backend development. Like there must be a database storage where all the Aadhaar numbers are stored, and here I entered the Aadhaar number. So it took that number, it cross-verified it with the backend server, and returned me that okay, this Aadhaar number doesn't exist. Like ye nahi hai, try another one. So all this thing, all this logic building, code writing, database entries, stores, these all things comes under the backend development. So now you must have wondering, okay, backend development तो हो गया, front end development तो हो गया, लेकिन ये interact कैसे कर रहे हैं? Like how they are communicating, like how front end gets to know about like what backend is serving, and how backend is getting know to about like what front end is asking for. Like कुछ तो होगा, like कैसे पता कैसे चल रहा है? Here comes into play the term API. Okay, API को like अगर अपने तुम्हें मिले मैंने लैंग्वेज में समझाऊं, like API is like a postman or your messaging services, anything that that helps to communicate between two mediums. Okay, let's take an example, like तुम चिट्ठी भेजते हो अपने गाँव या फिर अपने दादा को दादी को, ठीक है, तुम चिट्ठी में कुछ लिखते हो, एंड लाइक फॉर एग्जांपल तुम चिट्ठी में लिखा दादी मेरे लिए मिठाई भिजवा दो, तो वो चिट्ठी तुमने पोस्ट ऑफिस में डाली और पोस्टमैन लेके गया, तुम्हारी दादी के पास पहुंचाई, दादी ने चिट्ठी पढ़ी, दादी ने फिर मिठाई ऑर्डर करी और तुम्हारे घर पे मिठाई पहुंच गई. So here the postman or the mailing service act as a middleman. उसने तुम्हारा मैसेज या फिर तुम्हारी रिक्वेस्ट लेके दादी तक पहुंचाई. Same way API works. API helps to communicate between front end and back end. Okay. For example, if this front end needs something from back end, it requests it. So API does take that information. It gives it to backend. Backend processes that in data or information, okay, and then responds back with some information which API front end asks. If backend is capable enough to process that information or have that information, it will send it with a success response. Otherwise, it will send it with a negative response, like no, I don't have it. So API works as a bridge between the front end and backend. This is a very important thing when you learn backend development, because without your backend, your front end is nothing but a static application or static site. You must be knowing how API works. Next, in backend development, we comes to DevOps. DevOps is like, okay, now you have done your front end, you have done your backend, you have built your REST APIs. Okay, now लेकिन ये सब तुम्हारे लोकल सिस्टम है ना, तुम्हें शो करना है, तुम्हें दिखा दोस्तों को दिखाना हो, कैसे दिखाओगे? Then you will deploy your site, or if you deploy your application to deployment services such as Heroku, AWS, uh, or we have Vercel, Netlify, etc. So all this stuff, deployment, maintain, like deployment हो गया, then अगर तुम्हारा application बड़ा हो गया, then you will scale it up to a bigger level. If your application is grabbing traffic more and more, then you have to scale it up. Then you have to maintain also. So all those things comes under the term DevOps. Okay. So now, if we now mix all these things up, like we cover front end, we cover back end, and we cover DevOps, and we do it together, this is called the full stack development. The person who does all these things is known as a full stack developer. As I earlier said, full stack developer is a jack of all trades. हो सकता है he is not master of all trades, but he know these all things. Okay, now moving on to the next topic, why full stack development? Like क्यों full stack development ही क्यों? I want an answer from you all guys. Like यही क्यों? And तुम्हारे लिए यही क्यों? Like you all guys have joined this session to know how to be a full stack development. So क्यों full stack development ही क्यों?
Okay, it is involved in every domain. Okay, I will start from my side. Why full stack? I choose full stack development. Okay, जब मैं 8th क्लास में था तो तब फर्स्ट टाइम HTML CSS HTML not CSS like HTML is introduced like in my syllabus. So मैं और मेरा दोस्त used to build calendars and image libraries and all in that computer lab, and that thing used to be fascinate me a lot, like how कैसे मतलब मैंने 2-3 कुछ लाइन के कोड लिखे एंड स्क्रीन पे रंग बिरंगा सा कुछ आ गया, like टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया, बग से आ गए and all that thing. So from that time it fascinated me like okay, web कुछ है, तगड़ी चीज है, like it fascinated me a lot. After that, then I went to college, like I'm still in college, and in second year I explored that full stack development is a field which people are going forward to it. So I chose that I will be a full stack developer. Now moving forward with our session, why full stack development? Okay, so abhi like in recent everything is a digitalizing, like हर चीज डिजिटलाइज हो रही है, like 5 साल पहले जो चीज तुम फिजिकल वे में कर रहे थे, like दुकान फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ किराने का दुकान. ओके, 5 साल पहले तुम सुबह उठते थे, दुकान जाते थे, दूध चिप्स बिस्किट वगैरह खुद अपने आंखों से देख के हाथ में पकड़ के लेके आते थे, पैसे दे के आते थे, राइट? सर हाउ मच टाइम इट विल टेक टू बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर? ओके, we will come to like for me like I'm still learning about a lot, but I will say if you give your best and try to be consistent, then you will have a good knowledge about full stack development within 6 months. Is full stack only used to build website? No, full stack doesn't restrict itself to websites only. We will discuss in further session that full stack developer, as I earlier said, full stack developer is jack of all trades. He will be knowing, in fact, app development also, and computer software development also. In fact, he will be knowing about cybersecurity also. Like if you deploy your application, then it should be secured from hackers and hacking attacks. So a full stack developer will be knowing all that stuff also. Now getting back to our point where we are, like कहाँ था मैं? Okay, हाँ. So everything is digitalizing right now. Like 5 साल पहले तुम फिजिकल जो चीज करते थे, अब वो तुम्हारे मोबाइल फोन पे होती है. लाइक तुम सुबह उठते हो, फोन खोलते हो, ऐप खोलते हो, तुम सामान चूज करते हो, पेमेंट करते हो, एंड बूम तुम्हारे घर पे सामान पहुंच जाता है. 5 साल पहले ये चीज पॉसिबल नहीं थी, बट अब है. सो दिस brings you new opportunities, and this drives you to become a full stack developer. Like कैसे होगा, तुम मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करोगे ना, तुम वेबसाइट डेवलप करोगे, तुम बनाओगे वो चीज. So that fascinated me a lot. I guess this thing fascinates you also a lot. One more thing that is a major driving factor to become a full stack developer is the salary. Any guesses what is the basic average package of a fresher as a full stack developer? Any guesses from your side? Do write it down in the chat section. 5 lakh, 6 lakh, above 5 lakh. Good. So according to Google, according to Glassdoor, a basic average package of a fresher for full stack developer do revolves around 8 LPA. And I guess that's a decent package. Like for a fresher for a child like me, which comes from a tier 3 college, 8 LPA is a not bad package. And over the time when you gain seniority, there is no limit. In fact, I have seen full stack developers earning 50 to 60 lakhs per annum. Okay, like per annum in India, not in US. I'm not talking about international job offers. I'm talking about within the India, they are earning 50 to 60 lakhs per annum. So that is a major driving factor to become a full stack developer.
Okay, now if we move forward to our next topic, next point, opportunities of a full stack developer. So, as Prerna asked earlier, is full stack development only used to build websites? No. Full stack developer is the jack of all trades. He will be knowing about web development, he will be knowing app development, he will be knowing software development. Like उससे ये चीजें आती होंगी. Let's take a scenario. For example, मैंने एक कंपनी खोली, ठीक है, एंड मेरा एक टेक कंपनी है, तो मेरे को एक वेबसाइट भी चाहिए होगा, और जो भी मेरी कंपनी, जो भी मेरा प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसके लिए मेरे को ऐप भी चाहिए होगा. So what can I do? I can either hire एक वेब डेवलपर, either hire a और साथ ही उसकी एक ऐप डेवलपर हायर करना पड़ेगा, क्योंकि एक वेबसाइट बनाएगा, एक ऐप बनाएगा, राइट. बट इससे अच्छा क्या होगा, मैं एक फुल स्टैक डेवलपर हायर कर लूंगा. इससे मेरा टाइम बचेगा, मेरा पैसा बचेगा, कंपैरेटिवली बचेगा. लाइक अगर मैं 2 हायर करता हूँ कुछ एक्स अमाउंट पे, तो मैं अगर एक हायर करूंगा तो मेरे को 2x की जगह पे शायद 1.5x देना पड़े. प्लस मेरा रिसोर्स भी बचेगा, क्योंकि मेरे को अब एक ही बंदे को कैटर करना है. एंड वो एक बंदा, सिंस वो फुल स्टैक डेवलपर है, तो उसे नॉलेज होगी कि वेब डेवलपमेंट कैसे करते हैं, उसे नॉलेज होगी कि ऐप डेवलपमेंट कैसे करते हैं, उसे नॉलेज होगी कि इन सबको डिप्लॉय भी कैसे करते हैं. ठीक है, तो मेरे को ज्यादा रिसोर्सेस खर्च नहीं करने पड़ेंगे. इनफैक्ट वो एक बंदा वो सब चीज हैंडल कर सकता है. हाँ, वो उन सब चीजों में मास्टर नहीं होगा, दैट आई एग्री, बट फॉर मी दैट विल बी ओके. लाइक वन पर्सन, इफ वन पर्सन कैन हैंडल, दैट इज फाइन विद मी. सो फुल स्टैक डेवलपर ये सब चीजें कर सकता है. Next, if I brief you more about full stack developer, and full stack developers जब बड़ी कंपनीज में होते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक Amazon, Flipkart या सब में, वो कुछ टाइम बाद वो एज ए फिर डेवलपर काम नहीं कर रहे होते, वो एज ए मैनेजर पोस्ट पे होते हैं, वो फिर मॉनिटर कर रहे होते हैं बाकी डेवलपर्स को. लाइक क्योंकि उसके पास अब इतना नॉलेज है कि वो केटर कर सकता है एक वेब डेवलपर को भी, एक ऐप डेवलपर को भी, या फिर जो बैकएंड लिख रहा होगा उसको भी वो मॉनिटर कर सकता है. लाइक उसके पास उतनी स्किल्स आ चुकी होंगी. तो ये तो हो गई मेजर, लाइक जो ऑन पॉइंट अपॉर्चुनिटीज है एज अ फुल स्टैक डेवलपर, लाइक जो उसके टैक्स रिलेटेड है. एक और पॉइंट तुम वहां पे देख रहे होगे, एंटरप्रेन्योरशिप. लाइक हियर यू कैन सी आई हैव रिटन एंटरप्रेन्योरशिप. लाइक ये कैसे डेवलपमेंट से सीधा बिजनेस कैसे. सो इसमें भी एक सिनेरियो लेते हैं. फॉर एग्जांपल, तुमको एक स्टार्टअप स्टार्ट करना है, ओके, एंड तुम्हारा टेक बेस्ड स्टार्टअप है. यू हैड आइडिया फॉर दैट कि तुम्हें एक ऐप बनाना है, एंड दैट ऐप विल गिव सर्विसेज टू. सेम वे तुम्हें एक ऐप डेवलपर हायर करना पड़ेगा. तुम्हें उसके बाद फिर एक वेब डेवलपर हायर करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें अपनी वेबसाइट भी चाहिए, क्योंकि आजकल बिना वेबसाइट के तो काम होता नहीं है. ओके, उसके बाद फिर तुम्हें हो सकता है, उसके बाद फिर तुम्हें बैकएंड लिखने के लिए हो सकता है बैकएंड डेवलपर हायर करना पड़े. क्या पता उस ऐप डेवलपर को बैकएंड ना आता हो. यहाँ पे अगर तुम खुद एक फुल स्टैक डेवलपर हो, देन यू कैन स्टार्ट ऑल दिस थिंग्स बाय योरसेल्फ ओनली. तुम्हें नॉलेज होगी कि कैसे वेबसाइट्स बनती है, तुम्हें नॉलेज होगी कैसे एप्स बनते हैं, तुम्हें नॉलेज होगी कैसे बैकएंड लिखते हैं. इनफैक्ट और अगर तुम्हारा ही आइडिया है, देन तुम्हें पता होगा कैसे अप्रोच भी करना है इसको. सो दैट्स अ ग्रेट थिंग दैट कि तुम लोग खुद स्टार्ट कर सकते हो. ओके, इनफैक्ट अगर तुम खुद भी स्टार्ट नहीं करते हो, दैट्स फाइन, और अगर तुम हायर करते हो किसी को, देन इट विल बी गुड फॉर, तुम्हारे लिए काफी बेटर हो जाएगा उनको मॉनिटर करना है और उनके साथ इंटरेक्ट करना है. लाइक तुम अपना जो मैसेज है, तुम्हें क्या चाहिए, उसको तुम बहुत और बेटर तरीके से कन्वे कर सकते हो. सो दिस thing also comes in the opportunities of a full stack development. Okay, now we move on with the your very most awaited topic, how to start with full stack development. Like कैसे start करें. If now I share my journey, like how I started my full stack development journey, it is with Python language. In my second year, मेरे को Python language से like एक kind of लगाव हो गया था. I thought कि Python is the only language and उससे मैं सब कुछ कर लूंगा. But कुछ टाइम बाद मेरे को फिर अच्छा धक्का लगा कि नहीं. So so initially मैंने पाइथन के साथ स्टार्ट किया था, मैंने Django फ्रेमवर्क यूज किया था, बट लेटर ऑन आई स्विच टू बेसिक्स, द ट्रू बेसिस HTML CSS JavaScript. So and after that I am here. Now how you can start, go any of one of them, between one of them. या तो फ्रंट एंड चूज करो, बैक एंड चूज करो, लेकिन एक टाइम पे एक चूज करना, दोनों एक साथ ना करना.
आई वुड नॉट प्रेफर दैट, क्योंकि तुम दोनों में कंफ्यूज होगे कि ये फ्रंट कि एक टाइम पे तुम बैक एंड लिख रहे हो कि लॉजिक अच्छा कैसे हो रहा होगा, एक टाइम पे तुम फ्रंट एंड संभाल रहे हो कि ये भी नहीं हो रहा, ये कैसे हो रहा होगा। तो आई सजेस्ट कि एक टाइम पे एक चूज करो, या तो फ्रंट एंड या तो बैक एंड। बट अब अगर तुम्हें फ्रंट एंड के साथ जाना है, देन these all things you have to take in your mind. Front end जा रहे हो तो start with basics, the very basic, that is HTML, CSS and JavaScript. ये तुम्हारे बाइबल है लाइक फ्रंट एंड के लिए, इसके साथ ही स्टार्ट करना है। इसको अप्रोक्स 50% 60% तक मास्टर कर लो, क्योंकि यही है, इसी के ऊपर तुम्हारा सब कुछ बेस होगा। गो फॉर HTML, गो फॉर CSS, गो फॉर JavaScript, लाइक इसको सीखो और प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट करो। छोटे प्रोजेक्ट्स, चाहे कुछ हो, तुम्हारा नॉर्मल पोर्टफोलियो साइट हो, नॉर्मल कोई गेम बना ले तुमने, कुछ भी हो छोटा सा, भले ही देख के बनाओ, नो वरीज, देख के बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, अनटिल यू आर लर्निंग फ्रॉम इट। लाइक तुम सिर्फ उसको देख के चेप नहीं रहे हो, तुम्हें सीखना है उससे। लाइक उससे सीखो देन बनाओ, देखो सीखो बनाओ। एंड देख के बनाने में कोई दिक्कत नहीं, देख लो बना लो, एक बार देखो, दो बार देखो, तीन बार देख के बनाओ, नो वरीज। लेकिन अगर चौथी बार तुम सेम चीज बना रहे हो तो तुम्हें देखने की जरूरत ना पड़े, ऐसे सीख के बनाओ। ओके, once you master HTML, CSS, JavaScript around 40 50 to 60%, move on to frameworks. Okay, like move on to lightweight frameworks such as CSS frameworks. Okay, अब CSS frameworks क्या होती है? CSS frameworks such as Bootstrap और Tailwind तुम्हें pre-built components बना के दे देगी। Like जहाँ पे तुम बड़ा बड़ा CSS कोड लिख रहे होगे अपने किसी बटन के लिए, या फिर अपने किसी नैव बार फंक्शनैलिटी के लिए, या फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू के लिए, ये फ्रेमवर्क्स तुम्हें वो पहले से बना के दे देंगे, तुम्हें बस कोड लेना है एंड अपने एप्लीकेशन में अप्लाई करना है। सो दिस कम्स इन हैंडी जब तुम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हो, तो तुम्हें काफी ईजी हो जाता है। नेक्स्ट, जब तुम इसमें भी फेमिलियर हो जाओ, मूव ऑन टू बिगर फ्रेमवर्क सच एज रिएक्ट, व्यूजेस, एंगुलर। अब ये चीज अब ये फ्रेमवर्क तुम्हें काफी फंक्शनैलिटीज अवेलेबल करा देती है, जैसे सिंगल पेज एप्लीकेशन हो गया, कंपोनेंट बेस्ड बिल्डिंग हो गया, इजी राउटिंग हो गया। और फिर उसके बाद जब तुम स्केल अप करोगे अपने साइट को, तो ये काफी हेल्पफुल होंगे, क्योंकि तुम्हारा जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर होगा, मतलब फाइल मैनेजमेंट होगा, वो काफी सीमलेस हो जाएगा इन फ्रेमवर्क्स के थ्रू। ओके, नाउ अगर किसी को बैकएंड स्टार्ट करना है, तो बैकएंड जैसे मैंने पहले बताया था, प्योर लॉजिक बेस्ड होता है। ओके, तुम इसको दो लैंग्वेज में स्टार्ट कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट कि स्टार्ट विद जावास्क्रिप्ट, क्योंकि फ्रंट एंड में भी जावास्क्रिप्ट ज्यादा यूज हो रहा होगा। अदरवाइज अगर तुम्हें बैकएंड पाइथन पसंद है, डू स्टार्ट विद पाइथन, नो वरीज। पाइथन के लिए तुम्हारे पास फ्रेमवर्क्स हो गई, जैंगो हो गया, फ्लास्क हो गया। और अगर तुम्हें ये क्या बोलते हैं जावास्क्रिप्ट यूज करना है, देन नोड.js एंड एक्सप्रेस इज अ गुड टू स्टार्ट विद। हाँ, बैकएंड में अगर डेटाबेस स्टार्ट कर रहे हो, किसी डेटाबेस स्टार्ट कर सकते हो, नोएसक्यूएल हो सकता है, सीक्वल हो सकता है, माइएसक्यूएल इज द बेस्ट, मोंगोडीबी अभी काफी चल रहा है। तो बैकएंड के लिए ये चीज हो गई। ओके, वन मोर थिंग, अगर फुल स्टैक डेवलपमेंट कर रहे हो, तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम जरूर सीखना। वर्जन कंट्रोल सिस्टम काफी जरूरी होता है, क्योंकि अगर तुम जब बड़ी कंपनीज में ज्वाइन करोगे, तो वहां पे पहले से सोर्स कोड होगा बनाया हो, तुम डायरेक्टली स्क्रैच से बना रहे होगे, तो तुम्हें ये चीज समझनी पड़ेगी। ठीक है, तुम उनका कोड समझना पड़ेगा, और तुम डायरेक्ट आके चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रोडक्शन में चल रहा होगा, प्रोडक्शन बिल्ड बना होगा। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम कम्स इन हैंडी इन दीज प्लेसेस। तुम यहाँ पे अपना अलग सा ब्रांच बना के उस पर काम करते हो एंड ऑल दैट सब। तो गेट एंड गिटहब इज अ मस्ट। नेक्स्ट, डेवऑप्स में तुम्हारे डिप्लॉयमेंट साइट्स आ जाती हैं, जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, जैसे हेरोकू हो गया, फायरबेस हो गया, एडब्ल्यूएस हो गया, नेटलीफाई एटसेट्रा। ओके, नाउ सीखे कहाँ से, रिसोर्सेज क्या है? आई सजेस्ट, लाइक मैंने खुद फ्री रिसोर्सेज सीखा है, मैं प्रमोट नहीं करता पेड रिसोर्सेज लाइक यूडेमी वगैरह। जब चीजें फ्री हैं तो फिर क्यों जाके पे करना उससे के लिए। द वेरी ओन फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन, जो भी फ्रेमवर्क सीख रहे हो उसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ, वो तो बाइबल होता है उस चीज का। बट थोड़ा ट्रिकी हो सकता है कभी समझने में, अगर नहीं समझ पा रहे, देन गो फॉर ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स, जैसे dev.to हो गया, medium.com हो गया, इन आर्टिकल्स पे जाओ, काफी इजी वे में समझाया होता है वहां पे। ओके, नेक्स्ट, यूट्यूब चैनल्स हो गए। मैंने पर्सनली जो यूट्यूब चैनल्स फॉलो किए हैं, वो कोड विद हैरी है, जावास्क्रिप्ट मास्टरी, द नेट निंजा एंड फ्री कोड कैंप। कोड विद हैरी एंड जावास्क्रिप्ट मास्टरी लाइक तुम्हें वन स्टैक या फिर मीन स्टैक काफी अच्छे से समझा देंगे। तुम्हें फ्रंट एंड के साइड थोड़ा ज्यादा इंक्लाइंड हो, तो नेट निंजा, जैसे रिएक्ट फ्रेमवर्क, नेट निंजा काफी अच्छा है। एंड फ्री कोड कैंप तुम्हारे पे तुम्हें काफी सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, जिनको तुम देख के बना सकते हो, या फिर तुम रेफरेंस ले सकते हो। दीज रिसोर्सेज which I do prefer. नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटीज कैसे ग्रैब कर लो, सीख तो लिया, तो इसका तो एक ही फंड है, लाइक लिंक्डइन इज ओपी, लाइक लिंक्डइन इज द गॉड। लिंक्डइन पे जाओ, टैग करो रिक्रूटर्स को, और या फिर
कंपनी मेंबर्स को एंड उनसे रेफरल मांगो। नहीं होता, अगर कॉलेज टाइम में हो तो इंटर्नशाला इज द बेस्ट। इंटर्नशाला पे जाओ, इंटर्नशिप ढूंढो, पेड मिले अनपेड मिले डजंट मैटर, जाओ काम करो, 2 महीने के 3 महीने के लिए काम करो, सीखो, एक्सपीरियंस गेन करो, चेंज, जाओ ज्वाइन करो, एक्सपीरियंस लो, चेंज। दिस वर्क फॉर मी, लाइक मैंने ऐसे काफी सारे किए हैं एंड आई होप तुम्हारे लिए भी यही चीज काम करेगी। लिंक्डइन पे, लिंक्डइन इज द ओपी मास्टर, ओके। लिंक्डइन पे सब, लिंक्डइन इज द लाइक, जब इंटरनेशनल से बोर जाओ ना तो लिंक्डइन पे शिफ्ट कर जाना एंड रिक्रूटर्स को ढूंढ के उनको टैग करके उनसे रेफरल, लाइक जो भी कनेक्शन वाला सिस्टम होता है वो ट्राई आउट करो। So I guess that's all for today from my side. And if you guys have any questions, then I would love to resolve them. And any questions, like कुछ भी ना समझ में आया हो अभी तक, या फिर कैसे स्टार्ट करना है? Okay, I guess there are no questions, Shaurya. Yes, I also think that there are no questions. In case if you have any, then I will attach your LinkedIn profile in the YouTube video or in the Discord server as well. So they can contact you there if they have any. Yeah, my LinkedIn profile will be available to you all guys through Shaurya, and I will love to connect with you all and resolve your queries and take your sessions. Thank you Thank you all very guys. much Rajat, for the valuable Take session, care. for the great event. God bless you. And soon we will have you in the other event as well. Yeah, full stack developer needs to know a little bit of cybersecurity also, because if you are deploying a site, then you have to maintain that site also. Like तुम्हें देखना पड़ेगा कि उस पर अटैक्स ना हो रहे हो, कोई ऐसे फुद्दू सी साइट डाल दिया और तुमने अगले पल ही उस अटैक होकर तुम्हारा डेटा गायब। और अगर तुम एंटरप्रेन्योरशिप में अपने बिजनेस में स्टार्ट करो तो ये तुम चीज अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फुल स्टैक डेवलपर को हाँ साइबर सिक्योरिटी भी आनी चाहिए। वी विल आस्क शौर्य लाइक इसके बाद अगर और भी क्वेरीज जैसे स्टूडेंट्स को आ रही है साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड, सो वी विल टेक अ सेशन ऑन दैट, लाइक कि फुल स्टैक डेवलपर साइबर सिक्योरिटी के में भी कैसे Yes, होता है। we can have a session with this view as well, that cyber security with full stack development and so on. But Okay, guys, I think meeting will be end in 30 seconds because time is over. So thank you very much for joining. Thank you, Rajat, for this valuable session. Thank you, everyone. thank you. Have a great day, guys. Have a great day. Bye, bye, bye.